Om Timirandasya Jnana Shalakya Chakshuran Anmiltamena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swarupam Kadamayam Dadati Sapadantikam Vande Ham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunath Vitam Tam Sajivam Sadhvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pradan Sahagan Shri Lalita Vishaka Vitam Cha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavati Pasadesha Tarine हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपे कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंचा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we need to start from here. Ashwini Guruji. Text 7 से क्या? Yes, Guruji. Text 7. Although he is always burning with anxiety, such a fool always performs all kinds of mischievous activities with the unfulfillable hope of maintaining his so-called family and society. Yes, Guruji. Purport also. But it is said that it is easier to maintain a great empire than a small family, especially in these days when the influence of Kali Yuga is so strong that everyone is harassed and full of anxieties because of accepting the false presentation of Maya's family. The family we maintain is created by Maya. It is the perverted reflection of the family in Krishna log. In Krishna log, there are also family, friends, society, father, mother. Everything is there, but they are eternal. Here, as we change bodies, our family relationships also change. Sometimes we are in a family of human beings, sometimes in a family of demigods, sometimes a family of cats or dogs. Yes, Guruji. यार उतना हाईलाइट मत कीजिए, वो चलते रहेगा। मुझे आगे पढ़ना है क्या? Yes, Guruji. Yes. Complete purport लीजिए। Family, society, and friendship are flickering, and so they are called asat. It is said that as long as we are attached to this asat, this temporary non-existence family, non-existent society and family, we are always full of anxieties. The materialists do not know that the family, society, and friendship here in this material world are only shadows, and thus they become attached. Naturally, their hearts are always burning, but in spite of all inconvenience, they still work to maintain such false families because they have no information of the real family association with Krishna. तो मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है? Yes, Guruji. Okay. He gives heart and senses to a woman who falsely charms him with Maya. He enjoys solitary embraces and talking with her, and he is enchanted by the sweet words of the small children. Purport. Family life within the kingdom of the illusory energy Maya is just like a prison for the eternal living entity. In prison, a prisoner is shackled by iron chains and iron bars. Similarly, a conditioned soul is shackled by the charming beauty of a woman, by her solitary embraces and talks of so-called love, and by the sweet words of his small children, does he forget his real identity. I just have a small comment. If we read it with our Mataji's. अच्छा माताजी नहीं है. नहीं है यार. In this verse, the words strinam asatinam indicate that womanly love exists just to agitate the mind of a man. Actually, in the material world, there is no love.
Both the woman and the man are interested in their sense gratification. For sense gratification, a woman creates an illusory love, and the man becomes enchanted by such false love and forgets his real duty. When there are children as the result of such a combination, the next attraction is to sweet words of the children. The love of the woman at home and the talk of the children make one a secure prisoner, and thus he cannot leave his home. Such a person is termed in Vedic language a Grahamedi, which means one whose center of attraction is home. The word Grahastha refers to the one who lives with family, wife, and children, but whose real purpose of living is to develop Krishna consciousness. One is therefore advised to become a Grahastha and not a Grahamedi. The Grahastha's concern is to get out of the family life created by illusion and enter into real family life with Krishna, whereas the Grahamedi business is to repeatedly chain himself to so-called family life in one life after another and perpetually remain in the darkness of Maya. इसमें देखा प्रभुपाद क्या लिखे हैं, सिक्योर प्रिजनर. Deepak Prabhuji. Yes, Prabhuji, Hare Krishna, Ranatnam. Hare Krishna Prabhuji, don't know. The text 9, the attached householder remains in his family life, which is full of diplomacy and politics, always spreading miseries and controlled by act of sense gratification. He acts just to counteract the reaction of all his miseries, and if he can successfully counteract such miseries, he thinks he is happy. Purport: in Bhagavad Gita, the personality of Godhead himself certifies the material world as an impermanent place that is full of miseries. There is no question of happiness in this material world, either individually or in terms of family, society, or country. If something is going on in the name of happiness, that is illusion. Here in this material world, happiness means successful contraction of distress. The material world is so made that unless one become a clever diplomat, his life be a failure. But to speak of human society, even in the society of lower animal, the birds and beasts cleverly manage their bodily demands of eating, sleeping, mating, and defending. Human society competes nationally or individually, and in the attempt to successful, the entire human society becomes full of diplomacy. We should always remember that in spite of all diplomacy and all intelligence in the struggle for existence, everything will end in a second by the supreme will. Therefore, all our attempts to become happy in this material world are simply a delusion offered by Maya. जो टेक्स्ट 9 है ना, टेक्स्ट 9 देखो कैसे शुरू, टेक्स्ट 9 का जो लास्ट वाला लाइन है उसमें आ रहा है कि he can successfully counteract such miseries. नहीं, टेक्स्ट 9 परपट नहीं, टेक्स्ट Yes, Prabhuji. he can successfully counteract such miseries. He thinks he is happy. मतलब वो ना बस ऐसा बता रहे हैं कि जो काउंटरएक्ट करता है उसी को काउंटरएक्ट करने में उसे लग जाता है कि ओ नाउ ही इज हैप्पी. Yes. ऐसा मतलब बीमार पड़ रहा है, हॉस्पिटल का बिल आया, इंश्योरेंस ले रखा था तो पैसे पे कर दिए तो उसे लगता है ओ ही इज हैप्पी. वो ये नहीं समझ रहा है कि जो पेन आ रहा है उसका क्या चक्कर है. उसे लगता है मेरे अपनी जेब से कुछ दिया नहीं तो आई एम हैप्पी. I mean, another example can be आपकी मिजरी मेरे से ज्यादा मिजरी है तो मैं हैप्पी. हाँ मतलब देखो हम सही बात है, सही बिल्कुल सही बात है. ये बिल्कुल सही है. डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी ना है ये तो स्कूल टाइम से स्टार्ट हो जाता है ये तो. मुझे मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना, मतलब कुछ नॉइस वगैरह आता है या मतलब कभी भी नहीं ठीक आ रही है अभी. ओके, थैंक यू. ओके, लेट्स प्रोसीड. टेक्स्ट 10. Yes, Prabhuji. He secures money by committing violence here and there, and although he employs it in the service of his family, he himself eats only a little portion of the food thus purchased, and he goes to hell for those for whom he earned the money in such an irregular way. There is a Bengali proverb. The person for whom I have stolen accuses me of being a thief. The family members for whom an attached person acts in so many criminal ways are never satisfied. In illusion, an attached person serves such family members, and by serving them, he is destined to enter into hellish conditions of life. For example, a thief steals something to maintain his family and he is caught and imprisoned. This is the sum and substance of material existence.
and attachment to material society, friendship, and love. Although an attached family is always engaged in getting money by hook or crook for the maintenance of his family, he cannot enjoy more than what he could consume even without such criminal activities. A man who eats 8 ounces of food may have to maintain a big family and earn money by any means to support that family, but he himself is not offered more than what he can eat. And sometimes he eats the remnants that are left after his family members are fed. Even by earning money by unfair means, he cannot enjoy life for himself. This is called a covering illusion of Maya. 8 ounce क्या लिखा है? 8 ounce of food. 8 वो ounces. खुद तो 8 ounce से फूड ज्यादा खाएगा नहीं, पर गधे की तरह काम करता है क्योंकि बाकी लोगों को फूड उसे अवेलेबल कराना है फैमिली में. ठीक है, इस वजह. The process of illusory services to society, country, and community is exactly the same everywhere. The same principle is applicable even to big national leaders. A national leader who is very great in serving his country is sometimes killed by his countrymen because of irregular service. In other words, one cannot satisfy his dependents by the illusory service, although one cannot get out of the service because being a servant is constitutional position. मतलब प्रभुपाद ये कह रही है ना कि तब भी वो कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा डिपेंडेंट को. हाँ, मतलब वो कह रहे हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, वो एक पॉइंट है, पर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो इससे निकल भी नहीं सकता क्योंकि सर्वेंट है ना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है. अगर वो चाहे ना कि ठीक है मैं किसी को सर्व नहीं करूंगा तो ऐसा होगा नहीं कभी, मतलब आउट ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन सर्व करना ही पड़ेगा. अब होता क्या है कि बिकॉज इल्यूजनरी एनर्जी का इफेक्ट रहता है, तो वो रियल को सर्व ना करके, भगवान को सर्व ना करके, वो जो अनरियल है, टेम्पररी है, उसको सर्व करने लगता है, जैसे कंट्री मैन, ऑल दीस पीपल. मैं अपनी देसी भाषा में बोलूं तो कुत्ता बन जाता है. हाँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है रोज. सॉरी ब्रो. इट्स ओके, इस वजह. मतलब बाहर के लोग जैसे पेट्स रख लेते हैं, उनके साथ यही केस है ना कि वो कुत्ते बिल्ली पालते हैं, वो इस वजह से तो पालते हैं, उनके पास कोई होता नहीं है तो वो उन्हें सर्व करने लग जाते हैं. हाँ, मतलब ये एक तरह से सही भी है जो नवीन प्रभु बोल रहे हैं, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर तो सॉन्ग में वही बोल रहे हैं कि कृष्णा लेट मी बी योर डॉग, I will play, I will bark, I will do everything for you, but not for your illusionary energy. I don't want to do that. So एक तरह से वो सही भी है कि हम लोग भी become dog of illusionary energy, but we should be praying to the Lord to become His dog. Yes, sorry. ये सुधित. A living entity is constitutionally part and parcel of the Supreme Being, but he forget that he has to render service to the Supreme Being and divert his attention to serving others. This is called Maya. By serving others, he falsely thinks that he is master. The head of the family thinks of himself as the master of the family, or the leader of nation thinks of himself as the master of the nation. Whereas actually he is serving, and by serving Maya, he is gradually going to hell. Therefore, a sane man should come to the point of Krishna consciousness and engage in the service of Supreme Lord, applying his whole life, all of his wealth, his entire intelligence, and his full power of speaking. Oh, yeah. Text 11:13. मुझे पढ़ना है. Yes, yes, please. When he suffers reverses in his occupation, he tries again and again to improve himself. But when he is baffled in all attempts and is ruined, he accepts money from others because of his excessive greed. Thus, the unfortunate man, unsuccessful in maintaining his family members, is bereft of all beauty. He always thinks of his failure, grieving very deeply. Seeing him unable to support them, his family and others do not treat him with the same respect as before. Even as miserly farmers do not accord the same treatment to their old and worn out oxen. Purport. Not only in the present age, but from the time immemorial, no one has liked an old man who is unable to earn in the family. Even in the modern age, in some communities or states, the old men are given poison so that they will die as soon as possible. In some cannibalistic communities, the old grandfather is sportingly killed. Wow. And a feast is held in which his body is eaten.
Here the example is given that a farmer does not like an old ox who has ceased to work. Similarly, when an attached person in family life becomes old and is unable to earn, he is no longer liked by his wife, sons, daughters, and other kinsmen, and is consequently neglected. What to speak of not being given respect? It is judicious, therefore, to give a family attachment before one attains old age and takes shelter of Supreme Personality of Godhead. A person should employ himself in the Lord's service so that Supreme Lord can take charge of him and he will not be neglected by his so-called kingsmen. Who can say that कि ये 5000 साल पहले लिखा गया है? मतलब ये ज्ञान तो कब का है, millions of years पुराना है. But ये भी see, applicable है. you know, every word हाँ, is so true. yeah. Family man does not become averse to a family life, although he is maintained by those whom he was once maintained. Deformed by the influence of old age, he prepares himself to meet ultimate death. Family attraction is so strong that even if a person is neglected by family members in his old age, he cannot give a family affection and he remains at home just like a dog. देखो मैंने बोला था. In the way, अब परंपरा में बोल रहे हैं. Wow, Broji, wow. In the Vedic way of life, it is advised that before getting too weak and being baffled in material activities, and before becoming diseased, one should give up family life and engage oneself completely in the service of the Lord for the remaining days of this life. Prabhuji, please आप पढ़िए, मेरे mouth में food है. Therefore, the Vedic scriptures enjoin that as soon as one passes 50 years of age, um, he must give a family life and live alone in the forest. After preparing himself fully, he should become a sannyasi, travel widely, and distribute the knowledge of a spiritual life to each and every home. Text 15 आप पढ़ सकते हैं दीपक को. Yes, Broji. Thus he remains at home just like a pet dog and eats whatever he is so negligently given to him. Afflicted with many illness such as dyspepsia, and loss of appetite, he eats only very small morsel of food, and he becomes an invalid who cannot work anymore. Purport: before meeting death, a man is sure to become a diseased invalid, and when he is neglected by his family member, his life becomes less than a dog's because he is put into so many miserable conditions. Vedic literature enjoins, therefore, that before the arrival of such miserable condition, a man should leave home and die without the knowledge of his family members. If a man leaves home and dies without his family's knowing, that is considered a glorious death. But an attached family man wants his family members to carry him in a great procession, even after his death. And although he will not be able to see how the procession goes, he still desires that his body be taken gorgeously in procession. Thus, he is happy without even knowing where he has to go when he leaves his body for the next life. Sorry, Broji, for disturbance. Okay, so we have, I guess, Govind Prabhuji with us in the reading session today. Jai Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Hare Krishna. Krishna. Dandavat pranam. With accept humble obeisances from Dallas. I have heard so many glories of you, Prabhuji. I would like to meet you personally one day. Yeah, thank you, Prabhuji. Nice to hear you, Prabhuji. All the glories of Guru Maharaj, not mine. Yes, Prabhuji. But all the devotees I talk to, they all say good so many things. Ashwin Prabhuji, Son Gauranga Prabhuji, Yasham Keshav Prabhuji, everybody I talk to. So all glories to you and all glories to Guru Maharaj. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. Can I read Ashwini Yes. Prabhu? Yes, please. In that disease condition, a man's eyes bulge due to pressure of air from within, and his glands become congested with mucus. He has difficulty breathing, and upon exhaling and inhaling, he produces a sound like ghura ghura, a rattling within the throat. In this way, he comes under the clutches of death and lies down, surrounded by lamenting friends and relatives. And although he wants to speak with them,
he no longer can because he's under the control of time. Purport: for formality's sake, when man is lying on his deathbed, his relatives comes to him and sometimes they cry very loudly, addressing the dying man, "Oh my father, oh my friend, or oh my husband." In that pitiable condition, the dying man wants to speak with them and instruct them of his desires, but because he is fully under the control of the time factor, death, he cannot express himself, and that causes him in inconceivable pain. He is already in a painful condition because of disease, and his glands and throat are choked up with mucus. He is already in a very difficult position, and when he is addressed by his relatives in this way, his grief increases. Thank you, Prabhuji. Text 18. Thus the man who engaged with uncontrolled senses in maintaining his family dies in great grief, seeing his relatives crying. He dies most pathetically, in great pain and without consciousness. Purport. In the Bhagavad Gita, it is said that at the time of death, one will be absorbed in the thoughts he cultivated during his lifetime. A person who had no idea other than to properly maintain his family members must have family affairs in his last thoughts. That is the natural sequence for a common man. The common man does not know the destiny of his life. He is simply busy in his present flash of life maintaining his family. At the last stage, no one is satisfied with how he has improved the family economic condition. Everyone thinks that he could not provide sufficiently. Because of his deep family affection, he forgets his main duty of controlling his senses and improving his spiritual consciousness. Sometimes a dying man entrusts the family affairs to either his son or some relative saying, "I'm going. Please look after the family." He does not know where he is going, but even at the time of death, he is anxious about how his family will be maintained. Sometimes it is seen that a dying man requests the physician to increase his life at last for few years so that a family maintenance plan which he began can be completed. These are material diseases of conditioned soul. He completely forgets his real engagement to become Krishna conscious and is always serious about planning to maintain his family, although he change families one after another. Text 9. प्रभु जी एक रियलाइजेशन है, अभी जैसे इससे याद आया कि हमारी फैमिली में मतलब रिलेटिव थे मम्मी की साइड के, तो हमारे नाना जी के फ्रेंड, तो वो मिनिस्ट्री से ही रिटायर्ड थे, ए ग्रेड मिनिस्ट्री से। तो हर कोई ना उनकी लाइफ देख के कहता था कि मतलब लाइफ ऐसी होनी चाहिए, रिटायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि इतनी डिसिप्लिन लाइफ, एक बच्चा बाहर एक बच्चा यहाँ पे, कभी इंडिया से बाहर रहते थे कभी यहाँ पे, ठीक है, और मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन मिलिट्री वाला जैसे होता है ना, वैसे ही रहना बिल्कुल। प्रभु जी 79 की एज थी, घर से भाग गए वो, अच्छा, घर से भाग गए, आज तक वापस नहीं आए अपनी वाइफ को छोड़ के, किसी के साथ नहीं, अकेले। अब हम क्वेश्चन ही आता है कि भागे क्यों, तो वो किसी को नहीं पता क्यों भागे हैं। बस एक वीडियो दिखी थी, क्योंकि वो मिनिस्ट्री में थे तो पुलिस काफी रही 1 महीने तक उनके पास, उनके घर में। तो एक वीडियो मिली थी बस स्टॉप पे, वो आदमी गुस्से से आगे पीछे चल रहा था, और जब पुलिस वालों ने छानबीन करी, घर में रिपोर्ट निकाली, डॉक्टर से मिले, तो पता चला वो डिप्रेशन में था आदमी, जिसे लोग आइडल मान रहे थे। तो ये अच्छा वो आपने बता दिया, मैं तो सोच रहा कि उन्होंने वैराग्य हो गया था। प्रभु जी out of depression चले गए थे. Okay, text 19. At death he sees the messengers of the Lord of Death come before him, their eyes full of wrath, and in great fear he passes stool and urine. Purport: there are two kinds of transmigration of a living entity after passing away from the present body. One kind of transmigration is to go to the controller of sinful activities, who is known as Yamraj. Another is to go to the higher planets up to Vaikuntha. Here Lord Kapila describes how persons engaged in activities of sense gratification to maintain a family are treated by the messengers of Yamraj, called Yamduts. At the time of death, the Yamdutas become the custodians of those persons who have strongly gratified their senses. They take charge of the dying man and take him to the planet where Yamraj resides. The conditions they are described in the following verses. As a criminal
is arrested for punishment by the constables of the state, a person engaged in criminal sense gratification is similarly arrested by the Yamadutas, who bind him by the neck with a strong rope and cover his subtle body so that he may undergo severe punishment. Purport. Every living entity is covered by a subtle body and a gross body. The subtle body is the covering of mind, ego, intelligence, and consciousness. It is said in the scriptures that the constables of Yamraj cover the subtle body of the culprit and take him to abode of Yamraj to be punished in a way that he is able to tolerate. He does not die from this punishment, because if he died, then who would suffer the punishment? Buri halat hai bhai. It is not the business of the constables of Yamraj to put one to death. In fact, it is not possible to kill a living entity because factually he is eternal. He simply has to suffer the consequences of his activities of sense gratification. Hare Krishna. The process of punishment is explained in the Chaitanya Charitamrita. Formerly, the king's men would take a criminal in a boat in the middle of the river. They would dunk him by the grasping a bunch of his hair and thrusting him completely underwater. And when he was almost suffocated, the king constable would take him out of the water and allow him to breathe for some time, and then they would again dunk him in the water to suffocate. This sort of punishment is inflicted upon the forgotten soul by Yamraj, as will be described in the following verses. Hari Bol. बताओ, बड़ा खतरनाक है नहीं? हाँ प्रभु जी, ये देरी पढ़ना चाहिए। प्रभु मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो पहले हम पढ़े हैं ना, इसको दोबारा से पढ़ना चाहिए, जो प्रोसेस ऑफ पनिशमेंट से। प्रभु जी पढ़ेंगे क्या फिर से? बहुत इंपॉर्टेंट है। Ashwin Prabhu, can you read please? Yes. Yeah. The process of punishment is explained in the Chaitanya Charitamrita. Formerly, the king's men would take a criminal in a boat in the middle of the river. They would drunk him by grasping a bunch of his hair and thrusting him completely underwater. And when he was almost suffocated, the king's constables would take him out of the water and allow him to breathe for some time. And then they would again drunk him in the water to suffocate. This sort of punishment is inflicted upon the forgotten soul by Yamraj, as will be described in the following verses. ये मेरे को यहाँ पे ये this sort of punishment is inflicted upon the forgotten soul by Yamraj. तो मतलब forgotten soul क्या बोल रहे हैं कि जो अपने अस्तित्व को भूल चुका है, उसके लिए मतलब बोला जा रहा है। इस वजह मेरा अंडरस्टैंडिंग वही है कि मतलब पहले राजा लोग इस तरह का पनिशमेंट देते थे, तो मटेरियलिस्टिक आदमी जब यमराज के पास जाएगा, फॉरगॉटन सोल मतलब वही जो मटेरियलिस्टिक आदमी है, तो यमराज भी उसको वैसा ही पनिशमेंट देंगे, और ये अब फॉलोइंग वर्सेस से क्लियर हो जाएगा ऐसा प्रॉपर। ओके मैं पढ़ूं प्रभु जी? आई थिंक टाइम हो गया है। अच्छा ओके ठीक है प्रभु जी, कल पढ़ लीजिएगा। We can start with the learnings and realization. Will we start from you, Venugovind Prabhu ji? So प्रभु मैं तो बीच में ही एंटर करा था, तो बस जो मेरे को समझ में आया, एक्चुअली ये जो बुक है लॉज ऑफ नेचर, आज मतलब मैंने भी 7-8 साल बाद जाके पढ़ा इस बुक को, पहले कभी पढ़ा था 7-8 साल पहले, तो इसका स्मरण आ गया। बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेन करा गया है कि कैसे मृत्यु के समय हमें स्टूल और यूरिन पास होने लग जाता है, हम कैसे कृष्ण को भूले हुए हैं, और यमराज के दूत कैसे पनिशमेंट देते हैं। तो हरिजी बात में कोई ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग भक्ति में आ गए एटलीस्ट उनको तो ध्यान रखना चाहिए कि इससे भी बुरी दुर्दशा होती है। ये तो एक्सप्लेन करने में यहाँ पे हमें सुनने में डर लग रहा है, तो हमें भजन को सीरियसली लेना चाहिए, और ऐसा ना हो कि हमारी भी ऐसा पोजीशन हो कि यमराज आए हमें लेने के लिए, तो हमें हरि नाम लेना चाहिए। वैसे तो जिसने एक बार हरि नाम ले लिया उसके पास यमराज नहीं आएंगे, तो इसलिए हमें प्रयास से करना चाहिए कि विष्णु दूत आए। और गुरुदेव एक बारी बोल रहे थे कि बहुत बारी भक्तों को अजामिल का जो इंसिडेंस है उसको पढ़ के गलत फहमी हो जाती है कि हम भी अंत समय में अपने पुत्र या पुत्री को बुला लेंगे तो हमें यमराज लेने के लिए नहीं आएंगे, विष्णु दूत लेने के लिए आ जाएंगे। तो अजामिल एक एक्सेप्शन था शास्त्रों में, तो हमें अपने आप को अजामिल से एक पॉजिटिव थॉट लेके सीखना चाहिए, नहीं नेगेटिव थॉट लेके सीखना चाहिए कि लास्ट समय में हमें भी कुछ ऐसा स्मरण हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसी की प्रिपरेशन हमें कराई जा रही है कि हमें अपने भजन को सीरियसली लेना चाहिए। और गुरु महाराज जो अजामिल की सीरीज है उसमें बड़ा अच्छे से विष्णु दूत और यमदूतों के जो कन्वर्सेशन है उसमें भी बताए हैं
कि कैसे मृत्यु के समय क्या होता है, कैसे लोग पाप कार्य करते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए जितने ज्यादा से ज्यादा हम पाप कार्यों से बचें। और कभी कभी हमसे वाचिक हिंसा भी हो जाती है, वचनों से भी हिंसा हो जाती है, तो उन सारी हिंसा से भी बचना चाहिए कि हमारे वचन भी कठोर नहीं होने चाहिए कि किसी के हृदय को कष्ट पहुंचे। और महाराज बता रहे थे कि यदि एक जीवात्मा भी हमसे रुष्ट हो गया, ठीक है, तब भी हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए हम किसी भी जीवात्मा को रुष्ट ना करें और अपने भजन को बढ़ाएं, जिससे कि ऐसी सिचुएशन में हम ना पड़े। मेरा तो यही रियलाइजेशन है प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू गुरु जी। ये मुझे पॉइंट अच्छा लगा जो आपने गुरु महाराज का शेयर किया कि एक जीवात्मा, चाहे वो ऐसे हम बोलते हैं ना कि डिवोटी है तो हम बोलते हैं अरे हरे कृष्णा प्रभु जी मैं तो बहुत हम्बल बन जाते हैं। और वैसे हम तो ये तो बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट था प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमें जैसे पैसे की लेन देन करते हैं ना, हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। महाराज एक बार और एक पॉइंट बताए थे, यदि हमारा किसी के प्रति 1 रुपए का भी ऋण रह गया ना, ऋण, तो उसे चुकाने के लिए हमें दोबारा मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। अब इसमें कोई कह सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आपने अश्विनी प्रभु मेरे से 10 रुपए लिए और मेरी मृत्यु हो गई, तो अब आप कहोगे कि इनकी तो मृत्यु हो गई तो मेरा तो पता ऋण चढ़ गया, तो क्या करना चाहिए फिर? उस 10 रुपए को आप दान में दे दो। तो एक चीज और एक चीज और की दूसरी चीज इसमें ध्यान देनी चाहिए, जो महाराज ने बोलता है कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, जैसे पेरेंट्स से मान लो मैंने अपने पिताजी से 100 रुपए लिए और उनकी मृत्यु हो गई, तो उसमें मेरे को अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि पुत्र का उसमें अधिकार होता है। पिता की हर एक संपत्ति में किसी भी चीज में पुत्र का अधिकार हो, उसमें पाप नहीं लगता। और किसी के उसमें अगर हमारा किसी के ऊपर ऋण है तो वो हमें जल्दी से जल्दी चुकाना चाहिए, नहीं तो हमें दोबारा से मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। इसी बात पे हम्म। पिता की संपत्ति ऐसी है जो कि मतलब 2 नंबर के कार्यों से खड़ी मतलब खट्टी करी हुई है, या तो उसका क्या होगा प्रभु जी? क्योंकि अभी इसमें प्रभुपाद बताया कि उसका भी सन लगता है। उसका भी क्या बनता है, फिर से बोलिए। उसका भी सन लगता है, जैसे अभी कोई 2 नंबर के पैसे से कमा रहा है और खिला रहा है बच्चों को, तो हाँ, वो अपराध तो लगेगा वो ना, तो उसको प्योरीफाई। देखो, अगर मान लीजिए आज मेरे पिताजी उन्होंने 2 नंबर का धन कमाया, अब उन्होंने उसको करना छोड़ दिया, ठीक है, और अब मैं भजन कर रहा हूँ, मैं उस पैसे को भक्ति में लगा रहा हूँ, भक्ति, तो वो जो धन है, जो काला धन है, वो क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस मेंटालिटी से कर रहा हूँ कि मैं कमाता जाऊं काला धन और भगवान की सेवा में जाऊं, तब नहीं होगा। अब जो पास्ट में कमा लिया वो ठीक है, अब उसको भगवान की सेवा में लगाओ। भगवान की सेवा में कैसे? मान लो कि मैं अपने घर में उस धन का, मेरे घर में भोजन आया हुआ है, तो मैं भगवान को भोग तो लगा रहा हूँ ना, लेकिन उस एक्टिविटी को जब पता चल जाए तब स्टॉप कर देना चाहिए। अगर आप स्टॉप नहीं करोगे तो आपको अपराध लगता जाएगा, आपको पाप भोगना पड़ेगा। अगर आपको स्टॉप कर देना चाहिए उसी समय। मतलब चाहे इनहेरिटेड हो चाहे खुद का कमाया हो, वो भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए। हाँ, भगवान की सेवा में। मान लीजिए मेरा घर है, मान लीजिए हो सकता है मुझे पता है कि ये काले धन से कमाया हुआ घर है, ठीक है, लेकिन अभी मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं ना कि मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊं। रहना तो मुझे पड़ेगा ना। मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे घर को भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। इस घर में ठाकुर जी को ले आऊंगा, ठाकुर जी की सेवा होगी इस घर में, तो पूरा घर भगवान की सेवा में लग रहा है ना। मतलब मुझे अपने भौतिक सुख भोगने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना, भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है। अश्विनी प्रभु जी, तो मेरा रिलेशन यही है कि हम लोगों को और सीरियस होना है, स्पेशली मुझे तो और अच्छे से साधना करनी है। वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ आवर टाइम इन मेंटेनिंग द फैमिली। मतलब if we actually honestly figure out practically on paper, if we write hours we spend in maintaining the family, then they exceed comparatively a lot, 4 or 5 hours of sadhana and then rest of the hours in maintaining family only. So that's my realization that we should increase the number of hours we spend in maintaining the family. I mean, increase our hours for our sadhana and decrease that we spend in maintaining our own body. Actually, जैसे प्रभात बता रहे हैं कि 8 ounce तो अपनी बॉडी के लिए काफी है फूड। 8 ounce आप फूड खाओगे and then you are done. बट हम हाथ पैर हमारे जो है बढ़ते चले जाते हैं, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर और हम लोग परचेजिंग शुरू हो जाती है हम लोगों की,
ये प्लान वो प्लान, तो उन सबको मेंटेन करने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। तो आई थिंक वी शुड लिमिट आवर materialistic activities when we say we are devotee and increase our sadhana. That's my realization of the truth. Thank you so much, Prabhu ji. Naveen Prabhu ji. प्रभु जी इतने सीनियर वैष्णव बोले, मैं क्या कमेंट करूं प्रभु जी? आई थिंक आई विल पास। ओके प्रभु जी। दीपक प्रभु। यस प्रभु जी, मुझे तो बस वो एक पॉइंट अच्छा लगा था जहाँ प्रभुपाद जी, आई थिंक प्रभुपाद जी ये पूरे जितने भी टेक्स्ट हैं उसमें हर एक लाइफ की स्टेज की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि आप लोग सोचे, मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि प्रॉब्लम्स नहीं है हमारी लाइफ में, तो प्रभुपाद जी हर एक लाइफ से, पहले चाइल्डहुड, फिर यंग एज, फिर देन ओल्ड एज। तो अभी जो ओल्ड एज का बता रहे थे कि कैसे बचपन से वो अपने फैमिली से अटैच्ड होते हुए आता है, अपने मतलब जवानी में भी, फिर एंड शादी के बाद भी, देन ओल्ड एज में क्या होता है उसके साथ कि फिर उसे घर वालों को ही वो फिर खटकने लगता है कि यार ये क्या इसकी सेवा करनी पड़ती है। तो फिर देखा जाए तो बच्चा पैदा हुआ है तो मतलब नंगा पैदा हुआ है, उसे नहीं पता कुछ भी, पर उसे ना ऐसी कंडीशनिंग की जाती है, उसे जबरदस्ती अटैच कर दिया जाता है संसार से। माया का प्रभाव इतना होता है कि इतना ज्यादा अटैच हो जाता है, वो इतना ज्यादा अटैच हो जाता है। हाँ नहीं, जैसे मतलब ये कहेंगे देख मामा की ना मानेगा है, मामा है तेरे। तो वो ना जबरदस्ती अटैच कर दिया जाता है मामा से, फिर वो आप मामा को हाँ मेरे मामा कह रहे हैं। इतना अननेसेसरी अटैच हो जाता है, मतलब ये नहीं कहते गुरु है तेरे, मानेगा नहीं गुरु की बात, ये कभी नहीं कहेंगे। हाँ गुरु तो पता नहीं है, मतलब तो ऐसा लगता है गुरु बना लिया तो पता नहीं कुछ तो गलत कर लिया, मतलब लाइफ में कुछ तो गलत है। Yes, Deepak, thank you. हरे कृष्ण। थैंक यू हरे कृष्ण। अच्छा डिस्कशन और अच्छा टेक्स्ट था। प्रभु जी। आज ऐसा लग रहा था कि पीवीटी या फिर ब्रह्मचारी क्लास चल रही है और ब्रह्मचारी। रोज अगर ऐसे हम एक मिनट अगर डिस्कशन करें ना थोड़े से पैराग्राफ के बाद, तो फिर आई थिंक इंटरेस्टिंग और बुक इंटरेस्टिंग। कंप्लीट नहीं होगी। हाँ सॉरी। जाता है। यस प्रभु जी, यू आर राइट। आज हम लोग भी थे ना, अगर हर कोई फीडबैक देगा तो 7-8 मिनट उसी में चले जाएंगे। यस करेक्ट। एक्चुअली आज हम कम लोग थे ना, तो फिर इस वजह से भी जल्दी हो गया, ज्यादा लोगों में नहीं हो पाएगा ये। यस भगवान का प्लान भी ऐसा है कि माता जी कोई नहीं आज, जो Yes. फैमिली का ये सब चल रहा है। एक क्वेश्चन रहता है प्रभु जी, माता जी के भी आप पे पूछ रहा हूँ मैं। जब उनसे जब ये सब जब पढ़ती है ना, जैसे कहीं भी लिखा है तो फोकस मैन पे रहता है और माया वुमेन को बोला गया है, तो उनका क्वेश्चन ये रहता है कि हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों करा भगवान ने, प्रभुपाद ने, कि प्रभु हर जी, यस प्रभु जी। आपका क्वेश्चन समझ गया मैं, और सॉरी प्लीज वेणुगोपाल प्रभु जी, इफ यू अलाउ मी, इफ आई कैन से समथिंग। Yes, yes, Prabhu. तो प्रभु जी इसमें हो सकता है मेरा मेंटल स्पेकुलेशन हो, बट सोल के लेवल पे जब प्रभुपाद हम उसे एज अ पुरुष दिखा रहे हैं, बट इट इज एप्लीकेबल टू एनीबॉडी। जब स्त्री बोल रहे हैं तो हम भी स्त्री हैं, और सेक्स में आप ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करिए। शास्त्रों में यूज जरूर वो ऐसे पुत्र सन यूज शब्दावली में वो आता है, लेकिन देखा जाए तो सोल पे वो एक जैसे ही है। क्योंकि देखिए, अगर गृहमेदी और गृहस्था की एग्जांपल भी दिया प्रभुपाद ने, राइट। अगर आप एक गृहस्थ हैं, गृहस्थ कौन है? अगर आप वैष्णव सेवा में है, भगवान की सेवा है, अगर आपके घर मंदिर है, आप तो फिर आप गृहस्थ हो जाते हैं, अदरवाइज आप गृहमेदी हो जाते हैं। तो इट आल्सो एप्लीकेबल ऑन द कॉन्शियसनेस। इट्स आपकी कॉन्शियस क्या है। अगर आप अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, उनको एज अ वैष्णव ट्रीट कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं उनकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो करने में, देयर इज नथिंग रॉन्ग, राइट। जिस आपके प्रयास से अगर उनकी साधना भक्ति, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ती है, उनका कृष्ण के लिए प्रेम बढ़ता है, तो बहुत अच्छा है। और जो आपने क्वेश्चन पूछा, वो जो उसका क्या बोलते हैं अबाउट सेक्स, तो उसमें शास्त्र में यूजुअली रेफरेंस वो पुरुष और सन ऐसा किया जाता है, बट वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। I hope I was able to answer. Ashwin Prabhu, you want to add? No, I agree with you. So it's correct. Thank you, Deepak. Yes, Venugopaal. उदित प्रभु का क्वेश्चन एक बार रिपीट होगा? मेरे को आंसर तो प्रभु जी का समझ में आ गया। नवीन प्रभु का, उदित प्रभु का क्वेश्चन क्या था? प्रभु जी क्वेश्चन मेरा ये था कि जब माताएं पढ़ती है ना ये सब, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, उसमें प्रभुपाद का मेन फोकस रहता है कि आदमी जो है वो फंस जाता है बीवी और बच्चों के चक्कर में। हाँ।
है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब बीवी को मतलब फीमेल या फिर कोई भी फीमेल एंटिटी है उसे माया बोला गया है, तो माता ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें माया बनाया गया है, इसमें हमारी क्या गलती, हम सब इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं। प्रभुपाद के हाँ, साथ। तो मैं इसका आंसर देता हूँ कि एक बार श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे, तो प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, तो ऐसे ही कुछ आया, तो उसमें लिखा हुआ था कि प्रभुपाद अपना प्रॉपर्टी रीड कर रहे थे कि वुमेन्स आर फुलिश, वुमेन्स इज वुमेन्स आर ऑलवेज इन माया। तो ये बोल के प्रभुपाद चुप हो गया, और प्रभुपाद के लेफ्ट साइड पे यमुना माता जी बैठी हुई थी। यमुना माता जी, प्रभुपाद डिसाइपल जिन्होंने गोविंद आदि पुरुष गाया है। तो प्रभुपाद बोले और फिर चुप हो गया, यमुना माता जी की आंखें नीचे हो गई ये सुन के। तो प्रभुपाद बोले, यमुना, you are not a woman, you are a devotee, it's for a woman। तो प्रभुपाद क्या बोले कि ये भौतिकवादी स्त्री के लिए है, तुम तो भक्त बन गई ना, भक्त के लिए एप्लीकेबल थोड़ा है, भक्त तो स्त्री और पुरुष के स्तर से ऊपर होता है ना। तो भौतिकवादी व्यक्ति को के ऊपर वो एप्लीकेबल होता है, भक्त के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। और आपकी पत्नी हो तो जब कर रही है ना, तो वो तो भक्त हो गई ना। तो स्त्रियों को ऐसा समझना चाहिए, जो प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ रहा है वो तो भक्त हो गई ना, वो व्यक्ति तो भक्त हो गया ना। जो प्रभुपाद का ग्रंथ ऐसे थोड़ा कोई उठा के पढ़ सकता है, किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है ना कि प्रभुपाद के ग्रंथ, उसका कोई सुकृति है, वो भक्ति है, इस वजह से वो व्यक्ति पढ़ पा रहा है ना। तो माता जी लोगों को ऐसे स्पेसिफाई करना चाहिए बताकर। और हर व्यक्ति के कर्मास के हिसाब से उसको शरीर मिलता है ना। तो उनके ऐसा मतलब आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट, बट मैंने इसको सुना है। क्या सुना है कि जिसकी जिस लास्ट बर्थ में जो डिजायर होती है वही उसको जन्म मिलता है। मे भी हो सकता है कि लास्ट जन्म में वो पुरुष और उनका स्त्री बनने की डिजायर हो, तो इस जन्म में उनको स्त्री का जन्म मिला है। आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट, बट जहां तक मैंने सुना है वो यही है कि लास्ट बर्थ में हो सकता है उनके लास्ट बर्थ में ये डिजायर होगी स्त्री बनने की, तो इसलिए उनको इस जन्म में स्त्री का शरीर मिला। और यही चीज समझनी चाहिए कि चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी स्त्रियां होती हैं जो पहले भक्ति में आती हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास इस्कॉन में कि स्त्रियां माताएं पहले भक्ति में आई हैं, फिर उनके जो हस्बैंड्स हैं, फैमिली है, वो डिवोटी नहीं है, तो माताओं को स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उनके लिए वाइस वर्सा हो जाता है ना, उनके लिए पति माया है। तो ऐसे समझना चाहिए। I've seen the cases like this. माता जी आई हैं भक्ति में। और फिर वो तो मेन चीज उनको समझना चाहिए कि वो तो भक्त बन गई ना, वो स्त्री नहीं रही ना, तो भक्त बन गई ना उसके। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच। Thank you, Prabhuji. Very good explanation. Yes, so anything anyone wants to add? No, okay, we are good. So we can stop now. Vancha kalpatru bhascha kripa sindhueva cha patitanam pavanebhyo Jagat Bad ki jai. Hare Krishna for joining. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.